वर्ल्ड खत्म कर दूंगा। पर कसम से मैं इसे समझने में ना देर कर गया। और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में इसने अन्ना को दूसरा गांधी बोला था, हमें ना एक्चुअली तभी समझ जा। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। मैं ना केजरीवाल का सपोर्टर था और मैंने एक जमाने में केजरीवाल को अपनी पूरी सैलरी डोनेट करी थी। फिर केजरीवाल ने कहा, सुनो, मैं ना कांग्रेस का साथ लेकर भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। मैंने रिप्लाई किया, फिर तो मैं भी दाऊद का साथ लेकर अंडरवर्ल्ड खत्म कर दूंगा। पर कसम से मैं इसे समझने में ना देर कर गया। और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में इसने अन्ना को दूसरा गांधी बोला था, हमें ना एक्चुअली तभी समझ जाना चाहिए था कि केजरीवाल बड़ा होके नेहरू बनेगा। एक बार ना टीवी पे कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसी हेडलाइन आई थी, मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया। पर भाई साहब, इतना भी सच नहीं दिखाना था। केजरीवाल भाई गजब का टोपीबाज आदमी है। ये आदमी वो है जो मनीष और संजय सिंह के साथ कोविड के समय में स्टेज पर एक लड़के को बुलाता है और तीनों बिना मास्क के होते हैं और लड़के को मास्क कैसे पहनना चाहिए वो सिखा रहे होते हैं। कसम उड़ान चले कि जब ये आदमी पृथ्वी पे पैदा हुआ था ना, तब शनि और बृहस्पति ग्रह में आपस में बात हुई। बृहस्पति ने शनि से बोला, ए भैया धरती पे कलयुग आगो दिखे। दो साइंटिस्ट ना झूठ नापने की मशीन बना रहे थे। एक बोला, मशीन तो हम बना लेंगे पर झूठ की यूनिट क्या रखेंगे। दूसरा बोला, अबे क्या मतलब। तो पहला बोला, अबे जैसे डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, वेट को ग्राम में, करंट को करंट को एम्पियर में नापा जाता है, तो वैसे ही झूठ की यूनिट क्या होगी। तो दूसरा बोला, इसमें क्या सोचना है, केजरीवाल रख देंगे। पहले ने पूछा क्यों। दूसरा बोला, यमुना में इतनी धारा नहीं है जितनी केजरीवाल में झूठ है। अरे यमुना से याद आया, केजरीवाल ने बोला है कि यमुना में हरियाणा ने जहर मिला दिया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। केजरीवाल की यह बात सुनकर ध्रुव राठी ने भी सिर पे हाथ मार के बोला, अब इसे कैसे डिफेंड करूंगा पापा। मतलब ये बात घनी तगड़ी है कि केजरीवाल ये सब बोलते हुए हंसा भी नहीं। भगवान कसम, कोई मुझे बोलता कि ये सब प्रेस में जाके बोलना है तो मैं बोलते बोलते हंस जाता। नहीं मतलब भाई ने तो कह दिया कि दिल्ली के लोगों का जेनोसाइड करने की प्लानिंग थी। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। भाई ने फिर ये भी कह दिया कि वो तो यमुना के पानी को यहाँ पे यार ये बोल रहा है कि मास जेनोसाइड हो गया। जेनोसाइड जो वर्ड होता है वो अपने आप में एक मास वर्ड है। मास ना लगाना पड़े, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, उसी को जेनोसाइड कहेंगे। तो मास लगाने का कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पे, बट पता नहीं ये पढ़े लिखे केजरीवाल जी ऐसे कैसे बात कर रहे हैं।
हमारे इंजीनियर्स ने रोक दिया, नहीं तो खेला हो जाता। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया। सही। वाह भाई वाह, कोई स्पेशल पावर थी इसके पास कि ये हमारे इंजीनियर्स ने ये ऐसे 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 पानी रोक दिया। पानी आ रहा, पानी को ऐसे ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह रोक दिया। मतलब क्या ही बोले जा रहे है हैं भाई, यार। कितने चुस्त दुरुस्त इंजीनियर है तुम्हारे। तुमने तो दिल्ली को बचा लिया, तुम ना होते तो दिल्ली का क्या होता। अब दिल्ली ना चैन की सांस ले ओह। मतलब एक तो इसने ये भाषणबाजी के चक्कर में पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया और वो दिल्ली में भेज रहे हैं। मतलब कि ये एक यूनियन टेरिटरी और एक दूसरा स्टेट जो कि इंडिया के अंदर ही है, इन दोनों के बारे में ये बोल रहा है कि ये दूसरे स्टेट ने दिल्ली के लोगों को मारने के लिए जहर मिला दिया। ये कितना बड़ा कियोस पैदा कर देगा एक देश के अंदर, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में, दिल्ली और हरियाणा के बीच में, कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कह रहा है, एक यूनियन टेरिटरी का मिनिस्टर कह रहा है कि एक जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जहर मिला दिया पानी में। मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, जहर मिला दिया। इंडिया चाइना, इवन दो पाकिस्तान के साथ या अमेरिका का किसी के साथ वॉर हो रहा है, या रूस का यूक्रेन के साथ किसी का वॉर हो रहा है, उसमें भी कभी मतलब कि ये नहीं सुनने मिला। जैसे इंडिया चाइना में कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र पे डैम बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसमें भी कभी ये नहीं सुना कि चाइना ने पानी में जहर मिला दिया कि इंडिया के लोग बहुत बड़ी संख्या में मर जाएं। ऐसा तो यार मतलब कुछ भी बोले जा रहा है यार, ये कुछ भी। तो दिल्ली चैन की सांस कैसे ले सकती है। दिल्ली और सांस एक साथ जा ही नहीं पाते। पर क्या लगता है, जिन दिल्ली वालों का हवा में जहर मिलने से कुछ नहीं हुआ, उनका पानी में जहर मिलने से कुछ हो पाता। आई सीरियसली डाउट। कभी कभी तो दिल्ली वालों को खुद पे शक होने लगता है, अपन इस भगवान पर। अब इनके इंजीनियर्स ने पानी तो दिल्ली आने से रोक दिया, पर ना एक बेसिक सा छोटा सा प्रश्न है। अरे आई नो केजरीवाल और इस्लाम से सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछते ही दोनों एक्सपोज हो जाते हैं। पर फिर भी एक सवाल तो पूछने दो ना। छोटा सा सवाल है कि इंजीनियर्स ने दिल्ली में यमुना का पानी आने से रोका कैसे? कैसे रोका दिल्ली में यमुना का पानी आने से? मतलब कहने का ये है कि यमुना नदी है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये नदी है, नदी का पानी बिना डैम के कैसे रोका जाएगा? नदी का जो पानी है वो डैम या ऐसी चीजों से पॉसिबल है। अब ये थोड़ी है कि आप ऐसे मंत्र मार दोगे और पानी रुक जाएगा। पानी का बहाव तो चलता रहेगा, पानी तो आए जाएगा कंटिन्यूअसली। ये थोड़ी है कि रोक दोगे पानी को। नहीं, दिल्ली वालों को नाला लगता है, पर हरियाणा तक तो नदी है ना। अब नदी का पानी रोकने के लिए क्या किया? बाल्टी लेके खड़े हो गए, कोई रातों रात बांध बिल्कुल बना सही है। दिया, कोई हाँ, दीवार बिल्कुल खड़ी सही। कर दी, नदी की डायरेक्शन चेंज कर दी कि दिल्ली में ना घुसे, या फिर केजरीवाल अपने कच्चे में सारा नदी का पानी भर के बैठ गए और बोले जब तक ट्रीट नहीं हो जाता तब तक कच्चे में ही पड़ा रहेगा सारा पानी, छोड़ूंगा ही नहीं। अब भाई आईआईटी के इंजीनियर हैं, हो सकता है ऐसा कच्चा बना दिया हो जो नदी के पानी को समेट ले। इन्वेंशन तक करते ही रहते हैं ना आईआईटी वाले। हाँ, ये इनका ये होता रहा है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरे पास सब तरीके हैं। एक तो ये इनका अलग ही मैटर चलता रहता मुझे है। इतना सा बता दो, मेरा जीवन यहीं सफल हो जाएगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, प्लीज। अरे रुको 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 रुको, दूसरा प्रश्न भी है। पानी में अगर जहर मिला दिया तो ऐसा तो नहीं है कि जहर जो है वो दिल्ली दिल्ली में रहेगा, उसके आगे हाँ, खत्म हो जाएगा। अब ये भी तो बात है ना। बिल्कुल सही, पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। देखो,
कि अगर ये हरियाणा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीते, तो उन्होंने यमुना के पानी को प्रदूषित कर दिया। लेकिन जो यमुना नदी है वो एक्चुअली में हरियाणा के बाद दिल्ली, लेकिन दिल्ली के बाद तो यूपी में जाती है, और यूपी में अगेन क्या है, यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है। तो क्या बीजेपी की सरकार की बीजेपी की एक स्टेट की सरकार ये चाहिए कि बीजेपी का जो दूसरा स्टेट है वहां पे मतलब कि लोग मर जाएं? मतलब कुछ भी, मतलब कि एक दिल्ली की वजह से वो उत्तर प्रदेश के लोगों को थोड़ी मार देंगे, तो कोई औचित्य बनता नहीं इस बयान का जो अरविंद केजरीवाल ने दिया, बिल्कुल ही यही बेवकूफी भरा हरियाणा हुआ का पानी जो है वो दिल्ली से होकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों ही जगह जाता है। क्या उन पर असर नहीं पड़ता? वहां तो बीजेपी की खुद की सरकार है। भाई गजब का आदमी है। पर चलो इस गजब के आदमी को और यमुना के जहर को डिटेल में समझेंगे। यू आर वॉचिंग द वोक शो, बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। In the heart of a peaceful land, life flourished under the sun's gentle gaze. अब चलो रणजी ट्रॉफी मैच शुरू करते हैं, हरियाणा वर्सेस दिल्ली। और कसम उड़ान छल्ले की ये पहला मैच होगा जिसमें दिल्ली वाले भी हरियाणा की साइड होंगे। तो भाई केजरीवाल ने तो इल्जाम लगा दिया कि हरियाणा ने नदी में जहर मिला दिया। तो भाई सबसे पहला काम पता है क्या हुआ इसमें? दिल्ली जल बोर्ड से पूछा गया कि क्या सही में ऐसा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड का रिएक्शन था, क्या बात कर रहे हैं? फिर दिल्ली जल बोर्ड ने बताया पर झूठ एक्चुअली बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने साफ बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये दो स्टेट के रिलेशंस को खराब कर देगा। और इस पे जवाब दिया जाए, जो केजरीवाल ने ये बोला है इस पे केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा कि कौन सा जहर मिलाया है, किस तरह का जहर मिलाया है, कैसे मिलाया है, और आपने उसको कैसे रोका है। सारा प्लान जो आपने किया है वो प्लान हमें बताइए। वेरी गुड। दिल्ली जल बोर्ड कुछ ऐसा करना चाहता था। झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू। झूठ बोल रही है ये। हर बार एक नया झूठ बोलती है। भाई लिटरली दिल्ली जल बोर्ड ने लेटर लिखा जिसमें कैटेगोरिकली केजरीवाल को झूठा बोला गया। ये देखो, दी स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, ये देखो ये लिखा हुआ, दी स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट विदाउट एनी बेसिस एंड मिसलीडिंग। द फैक्ट ऑफ द मैटर is that DJB Delhi Jal Board regularly monitors incoming water quality and regulates supply depending on the various parameters। अब देखो यहाँ पे एक बात है कि जो यमुना का पानी है उसके अंदर अमोनिया की मात्रा उतनी ही रहती है, अमोनिया की मात्रा उतनी रहती है, क्योंकि सीवरेज का जो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या जो भी सीवरेज का पानी उसके अंदर गिरता है उसकी वजह से, और कुछ और मटेरियल या वेस्ट जो यमुना में गिरता है उसकी वजह से क्या होता है कि अमोनिया की मात्रा जो है एक लेवल पे रहती है, हमेशा उसमें बढ़ जाती है। लेकिन वो कब ज़्यादा बढ़ जाती है उसके पीछे एक रीज़न है कि यमुना का पानी जो है साल भर, मतलब कि जो उसमें बहता रहता है साल भर चलता है। लेकिन सर्दियों के अंदर आके क्या होता है कि ये पानी का जो पानी आता है यमुना में पीछे से, वो पानी ही कम हो जाता है। तो जो पानी कम हो जाता है तो उसके अंदर जो अमोनिया की मात्रा है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, तो इसलिए वो पानी बहुत ज़्यादा मतलब कि दूषित दूषित हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि जहर मिला दिया, अमोनिया की मात्रा पहले भी उतनी ही रहती थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। लेकिन सर्दियों के अंदर आकर क्या होता है कि यमुना के अंदर पानी ही कम हो जाता है, इसलिए वो प्रदूषण ज़्यादा दिखाई देता है। नहीं मतलब ये भी गजब की मतलब बात। मैं ये रिकॉल जहाँ तक कर पा रहा हूँ, जो रीजन होना चाहिए जियोग्राफिकली, वो पानी की अवेलेबिलिटी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि पानी कितना आ रहा है। तो पानी अगर ज़्यादा आ रहा है तो अमोनिया की मात्रा को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर पानी ही कम आ रहा है तो अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। है कि तुम्हारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हारी मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो तुम्हें झूठा बोल रही है। फिर जब तुम जेल में थे तो जेल की अथॉरिटी तुम्हें मारने की कोशिश करती थी, ऐसा तुम खुद कहते हो। और वो जेल की अथॉरिटी दिल्ली सरकार के अंडर आती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। वेरी गुड। वो भी तुम्हारे ही अंडर आती थी। फिर यमुना की सफाई में 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये भी तुम्हारी अपनी अथॉरिटी बताती है, और तुम कहते हो झूठ बोल रहे हैं।
एक तो ये सीएजी की जो रिपोर्ट आई हुई है, जो सीएजी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए इनको बोला हुआ है, काफी बार बोल दिया आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार को कि आप विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी है, एलजी ने भी बोल दिया, लेकिन ये रख नहीं रहे हैं। तो कहीं तो चोर बन रही है आम आदमी पार्टी की। आप वो रिपोर्ट क्यों नहीं रख रहे हो? अगर आप वो रिपोर्ट रखते हो तो आपको अपनी सत्यता का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे कि आशंका है कि उस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे क्लेम्स किए गए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं, वो क्लेम्स तो जो सच्चाई है वो सामने आ नहीं रही है पूरी तरीके से। और एक बात जो मुझे फील होती है कि आम आदमी पार्टी, ऐसे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो बिल्कुल सच्ची नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी है जो एक झूठ को लगातार बार बार बोलती है, लगातार बोलती है और जोर जोर से बोलती है कि एक टाइम के बाद में वो झूठ सच लगने लग जाता है। ये हमेशा से इनकी राजनीति का एक हिस्सा ऐसा ही रहा है कि ये सत्य कभी पूरा सत्य नहीं बोलते हैं। ये हम या तो हमेशा आधा सत्य बोलेंगे या हमेशा झूठ बोलेंगे, और झूठ बोलेंगे तो बार बार रिपीटेडली उसको हर जगह स्टेब्लिश कर देंगे उस झूठ को। ये भाई आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू, क्योंकि तुम्हारी ना मोदी से बन रही है ना तुम्हारी एलजी से बन रही है। तुम्हारी अपनी एमपी तुम्हारे घर के बाहर कचरा फेंक फेंक के जा रही है। तुम्हारी बिल्कुल सही। अपनी अथॉरिटी तुम्हें कल मार कल स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के घर के आगे 3 ट्रक भर के कचरा डाला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर दिया गया। और स्वाति मालीवाल खुद आम आदमी पार्टी की ही मेंबर है, पार्लियामेंट के अंदर मेंबर है राज्यसभा की। और अभी थोड़े टाइम पहले ये खबर आई थी कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के घर में ही पीटा गया। और जब इस मामले की जांच हो रही थी तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी गायब थी। तो कहीं ना कहीं तो सवाल उठेंगे इस चीज पे। मारना चाह रही है। तुम्हारी अपनी अथॉरिटी तुम्हें झूठा बता रही है। तुम्हारा नेता जिसे तुमने पिता तुल्य बताया था, यानी अन्ना हजारे, वो तुम्हें गालियां दे रहा है। तुम्हारा पुराना साथी तुम्हें हराने के लिए वीडियो बना रहा है। तुम्हारा दूसरा साथी तुम्हें आत्ममुग्ध बौना बोल रहा है। तुम्हें पता है अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम क्या हो? केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। ये तो सच केजरीवाल है। कमीना है, केजरीवाल घटिया है, अगर ये केजरीवाल सच बोल रहे हैं। नवाब है, केजरीवाल खिलौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। ये कुछ वर्ड जो लास्ट वाले हैं, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना, ये इसने बिना देखे बोल दिए। तो खुद को फील करता है कि जो इतने मजे लेकर ये सब वर्ड बोला कि हाँ, मेरे लिए लोग ये बोलते हैं तो अच्छा है। तो कुछ वर्ड तो इसने बिना देखे ही बोल दिए, अपने मन में आए जो ही। तो इसको भी पता है कि मैं शायद ऐसा हूँ कुछ, ये कहीं कुछ मेरा कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि लोग मुझे नमक हराम या कमीना, नमूना और ऐसा कुछ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये खुद को दोषी मानता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब दिल्ली जल बोर्ड ने तो भाई की ऐसी की तैसी कर दी। अब बारी थी हरियाणा के मुख्यमंत्री की। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, जो पानी रोका कहां गया, इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी। अब ये तो कुछ सवाल थे जो ब्रो ने पूछ लिए, बट ब्रो गॉट नो चिल। ब्रो ने कहा तू यमुना साफ कर या ना कर। केजरीवाल, तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो बच नहीं रहा है। सुपड़ा साफ करेंगे तेरा 5 तारीख को। इसके बाद मोदी जी ने भी कह दिया कि भैया मैं भी तो दिल्ली में ही रहता हूँ, क्या हरियाणा का सीएम मुझे मारना चाह रहा था? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। फिर इसके बाद नायाब सैनी यमुना के तट पर गए, बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर, और यमुना में घुसकर यमुना का पानी पी लिया। अब केजरीवाल ने इसका बना दिया कि नायाब सैनी ने यमुना का पानी मुंह में तो लिया, पर वहीं की वहीं कुल्ला कर दिया। नायाब सैनी ने असली वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर लगा दी और कहा इसका तो हर बात में झूठ बोलने का काम हो गया है भाई। तो बेसिकली केजरीवाल ने डॉक्टर्ड वीडियो डाला था। और चलो एक घड़ी को मान लिया जाए कि केजरीवाल की वीडियो डॉक्टर्ड नहीं थी, तो नायाब सैनी ने ना 2 बार पानी पिया था यमुना से उठा के वहीं पर।
अब पहली बार का अगर थूक भी दिया हो तो कमबख्त दूसरी बार भी तो पिया था। तेरा लॉजिक तो यही गलत हो गया ना। पर केजरीवाल ने क्लिप काट के लगा दी। अब लोग केजरीवाल को क्लिप कटवा कहने लगे। फिर कुछ लोगों ने उन लोगों को कहा, देखो क्लिप कटवा कहने की कोई जरूरत नहीं है, इस क्लिप कटवे में से क्लिप को क्लिप कर दो, बाकी ठीक है। अब बताओ क्या बोलूं मैं इस आदमी को। फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता है। वहां क्या होता है वो आगे बताऊंगा। अभी ना ग्राम दर्शन में चल लेते हैं, क्योंकि असली न्यूज तो वहीं आई से लव मिलती दिस है ना पार्ट भाई। ऑफ ग्राम ओल्ड दूरदर्शन थीम, मजा आ जाता है। राम सत्यम राम। शिव सुंदरम। ग्राम दर्शन में आपको स्वागत है। वेरी गुड। केजरीवाल से पूछी गई कि पंजाब में कितने सारे वादे किए, उनने कब पूरा करोगे। केजरीवाल बोलो, अरे कर देंगे, कहा जल्दी हो रही है। पत्रकार ने पूछी, मतलब चुनाव तक 6 महीना पहले करोगे। केजरीवाल बोला, तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे 6 महीने पहले, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते, वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे। मान लो 2 महीने पहले करते हैं, क्या गलत है? हम बे आज से पहले तो बोल रहा हूँ कि कोई पार्टी कुछ ना करे, बस लास्ट के 6 महीना में थोड़ा सा काम कर दें और वोट ले जाएं। अब कह रहा हूँ कुछ गलत ना 2 महीना पहले भी। भैया तू किस मिट्टी को बनो है? तू बातन ने बोल बोल के भूल जाए, या तेरा डिजाइन ऐसा है? बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं, आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। एक तो यार ये अरविंद केजरीवाल पिक्चरें ज्यादा देखता है क्या भाई? मतलब इसने पिक्चरों की जिंदगी को असल में मान लिया है क्या? पिक्चर की जिंदगी और फर्क होता है यार दोनों जिंदगियों में। ये जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं कि नेताजी लास्ट में 6 महीने काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरे टर्म काम करना पड़ता है, रोड्स बनती हैं पूरे, ऐसे नहीं है कि लास्ट के 6 महीने में बन जाएंगी। जो सड़कें बनती हैं, जो ब्रिजेस बनते हैं, जो डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो जो भी शिक्षा पे काम होता है, वो उस लास्ट के 6 महीनों में नहीं होता है। लास्ट के 6 महीनों में जो होता है काम, वो होता है कि जनता को लुभाया कैसे जाए। डेवलपमेंट का काम तो पूरे टर्म चलता है, 5 साल के 5 साल चलेगा, लेकिन लास्ट के 6 महीनों में जनता को लुभाया कैसे जाए, वो काम लास्ट के 6 महीने में होता है। जैसे कि आपको बिजली फ्री कर देना, पानी फ्री कर देना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या नाम है, आपको कुछ महीने का कुछ पैसा दे देना, जैसे कि महिलाओं के लिए इतने रुपए दे देंगे, या बूढ़ों के लिए इतने दे देंगे, या पुजारियों को इतने दे देंगे। ये सब आम आदमी पार्टी ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी का किया है, अदर्स जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी घोषणाएं कर रही है। लेकिन जो केजरीवाल कहता है ना कि 6 महीने में ये सब करते हैं, बाकी तो ये पूरे 5 साल में कोई काम नहीं करते हैं। तो जो डेवलपमेंट के काम होते हैं ओवरऑल, वो पूरे 5 साल ही किए जाते हैं, वो ये 6 महीने में नहीं होते। कोई भी सरकार करती है वो पूरे अपने टर्म में ये काम करती है, डेवलपमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करती है, इन्वेस्टमेंट लाने का काम करती है। लेकिन जो लास्ट के 6 महीने में काम होता है वो मैक्सिमम पार्टियों द्वारा ये होता है कि जनता को लुभाया कैसे जाए। लेकिन जो जहां तक बात है कि आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लास्ट के 6 महीनों में ही डेवलपमेंट का काम कर रही है, और लास्ट के 6 महीनों में ही लोगों को लुभाने का काम भी कर रही है। जो उन्होंने जो परमानेंटली जो चीजें दी थी, जो किराया फ्री किया था, या इलेक्ट्रिसिटी फ्री की थी, पानी फ्री किया था, उसकी बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं एक्चुअली में। अब इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए थे, तो उसके अंदर जो 50% मोहल्ला क्लिनिक है वो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो 50% है वो तो बंद पड़े हैं ना। लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत ही अच्छा, मतलब कि इनिशिएटिव है। अच्छा होगा, लेकिन अगर आप उसको पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे हो, या आपकी मेंटेनेंस उन पे अच्छी तरीके से नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, या इलाज अवेलेबल नहीं है, या उन पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको एक अच्छा एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो दुनिया के सामने? दुनिया देखने आ रही है, आप उनको एक क्लिनिक दिखा रहे हो कि हाँ ये बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब मोहल्ला क्लिनिक ये है। लेकिन उसको अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी स्टेट के अंदर या किसी भी जगह में, तो वो प्रॉपर तरीके से चलने चाहिए। ये नहीं है कि उन 100 बनाए उनमें से 10 चल रहे हैं तो आपने कह दिया कि बहुत अच्छा है, बाकी के 90 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोहल्ला क्लिनिक, तो उनको भी चलाना उतना ही जरूरी है जितना उन 10 को पहले वालों को चलाया था। जैसे तैसे करके नीतीश कुमार रुक हो गया।
जैसे तैसे करके नीतीश दी जा रही तो नीतीश कुमार ताली बजाने लग गया। जैसे तैसे करके नीतीश कुमार रुक गया। नाथूराम गोडसे नीतीश कुमार के दौरे खुद उतर के आया और बोला, थैंक यू नीतीश भाई, थैंक यू। एक तो ये जो वो समझे, नहीं तो ये तो मेरा हर साल बुरा हाल कर दें, मेरा खून फूंक दें। अब खेल समाचार। रणजी ट्रॉफी चल रही है। विराट कोहली रेलवे की साइड से खेल रहा है ना, स्क्रिप्ट में दिक्कत ना है, जर्सी दिल्ली की पहरी है, खेल रेलवे की साइड से रहा है। बस सेंचुरी बनाने थे मात्र 94 रन ते रह गो, नहीं तो खूब बढ़िया खेला बेचारा। परे थे लॉर्ड शरदुल ठाकुर, वह ने सेंचुरी भी बना दी, हैट्रिक भी ले ली। अब भैया अपना अपना नसीब है सबको। तो भैया ये है आज के मुख्य समाचार। अब मैं चलूं, मैं लिखता हूं कौन पढ़ो। अब भाई दिल्ली सरकार के द्वारा बताया गया कि हरियाणा पानी में अमोनिया के लेवल को चेंज कर रहा है। अमोनिया का लेवल बढ़ाकर हरियाणा दिल्ली में भेज रहा है और पानी उससे जहरीला हो रहा है। आतिशी मारलेना ने एक लेटर लिखा जिसमें बताया कि दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि वो केवल 1 ppm अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, पर हरियाणा 7 ppm अमोनिया भेज रहा है। लेकिन एक सेकंड, दिल्ली जल बोर्ड ने तो केजरीवाल को झूठा बोला था ना, और ऊपर से अमोनिया की बात दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही है। देखिए ये आपको ना बिल्कुल शोभा नहीं देता, वो आगे बताता हूं अभी क्यों। देखो, पानी में जहर मिलाना और अमोनिया का लेवल बढ़ना, ये ना दो अलग अलग बातें हैं। दिल्ली और हरियाणा की वर्षों पुरानी लड़ाई है कि पानी में अमोनिया का लेवल कम बढ़ रहा है। ये देखो 2018 का आर्टिकल है जिसमें दिल्ली हरियाणा को अमोनिया कंट्रोल करने की सलाह दे रही है। ये जनवरी 2021 का आर्टिकल है जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई अमोनिया को थोड़ा हौला रखो, थोड़ा कम रखो। लेकिन आज तक केजरीवाल ने एक बार नहीं कहा कि हरियाणा दिल्ली में जहर भेज रहा है, दिल्ली के लोगों को जेनोसाइड कर देगा। भाई अब बोल रहा है, मतलब कुछ तो सेंस होगी ना, क्यों बोल रहा है अब। और अगर लेवल ऑफ अमोनिया की ही बात है तो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने ना एक रिपोर्ट दी है, वो सुनो। ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, ये कह रही है कि भाई हरियाणा की एंट्री के पहले पल्ला पे 2 mg पर लीटर अमोनिया का लेवल, ये देखिए आप, जैसे ही दिल्ली के अंदर एंटर होता है 7 mg पर लीटर होता है। फिर ISBT ब्रिज पे 47 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ITO के ब्रिज पे 30 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ओखला जहां से अहमदुल्ला खान कैंडिडेट है, जहां से जो राइट हैंड अरविंद केजरीवाल के, वहां 44 mg पर लीटर होता है। और जब तक दिल्ली छोड़ता है वो 85 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मतलब असली जहर और असली गंदगी तो अरविंद केजरीवाल मिला रहे हैं। मतलब दिल्ली छोड़ते छोड़ते यमुना जी में अमोनिया का लेवल 80-85 हो जाता है। हरियाणा से 2 ppm आ रहा है और वो उन्हें जहर लग रहा है, लेकिन दिल्ली यूपी और हरियाणा को 85 ppm अमोनिया भेज रहा है। ये एग्जैक्टली यही तो कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा पे तो उन्होंने ये कह दिया आम आदमी पार्टी ने कि हरियाणा जहर मिला रहा है, जबकि वो अमोनिया की जो मात्रा है हरियाणा की तरफ से बहुत कम आ रही है। लेकिन जो दिल्ली से होकर यमुना का पानी आगे यूपी के अंदर जा रहा है, उस पानी के अंदर अमोनिया की मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो कमी तो दिल्ली के अंदर है ना, दिल्ली के अंदर कमी है। और वो अब कल को योगी जी बोल दें कि अरविंद केजरीवाल पानी में जहर मिला रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जी कैसा फील करेंगे। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो ये अच्छी राजनीति है एक तरह की यार, मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आता कि लोग इनकी राजनीति के चक्कर में ना लोगों की ऐसी तैसी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद दिल्ली के अंदर रहा था, काफी टाइम रहा हूँ। और ये जो सर्दियों के अंदर आके है ना, मतलब मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, मेरे को डॉक्टर्स की दवाई भी मतलब कि मेरे शरीर को सही नहीं कर पा रही थी। इतना ज़्यादा मेरे शरीर के अंदर गड़बड़ हो गई थी। मैं कुछ भी खाता था तो वो पचता नहीं था, लूज मोशंस मेरे लगे रहते थे, डायरिया की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, पेट में बहुत दर्द रहता था, अंतड़ियों में दर्द होता था बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे बाल भी झड़ने लगे थे और आंखें पीली होने लगी थी, मेरी स्किन काली होने लग गई थी मेरी। तो मैं अपने होम टाउन राजस्थान वापस आया और फिर 15 दिन मैं यहाँ रुका, थोड़ा ठीक हो गया मैं दवाइयाँ लेके, और मैं अच्छे से मतलब कि मेरी बॉडी सेट हो गई। उसके बाद मैं वापस दिल्ली गया था रहने के लिए। तो 15 दिन मेरे को यहाँ पे आके ठीक हुआ। मैं वहाँ रहता तो शायद ठीक भी नहीं होता, क्योंकि एक तो मैं जो सांस ले रहा हूँ उसमें भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सारा दिन मास्क लगा के रहना पड़ता था मेरे को वहाँ पे। पानी में मिला के वो ठीक है।
यमुना हरियाणा के सोनीपत से निकलकर दिल्ली आती है और उसके बाद नोएडा से होते हुए ग्रेटर नोएडा में यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाती है। दिल्ली से भेजा हुआ यमुना का पानी यूपी और हरियाणा के करोड़ों लोग पी रहे हैं, पर जेनोसाइड 2 ppm पर हो रहा है और 85 ppm पर नहीं हो रहा। अबे कुछ तो शर्म कर ले। अब इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को बुलाया और पूछा, बता भाई, तूने कहा था हरियाणा दिल्ली का जेनोसाइड करने के लिए पानी में जहर मिला रहा है, तो प्रूव कर। इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली केजरीवाल से 5 क्वेश्चन किए। पहला, हरियाणा सरकार ने कौन सा जहर यमुना में मिलाया। दूसरा, अच्छा अगर जहर मिलाया तो कितना जहर मिलाया और उसका नेचर क्या था। फिर तीसरा क्वेश्चन यह था कि जहर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मैनरिज्म अपनाया गया और कौन सी जगह पर उसे डिटेक्ट किया गया। चौथा क्वेश्चन था, कौन से दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर थे जिन्होंने पानी में जहर को डिटेक्ट किया। और पांचवा क्वेश्चन था कि इंजीनियर ने कैसे और कहां ये टेस्ट किए, उनके रिजल्ट्स क्या थे, वो भी दे दो भाई साहब। अब जो टेस्ट किए हैं वो किस आधार पे किए, उनका मेथड क्या है, कैसे कर दिए वो टेस्ट, तो वो प्रोसेस क्या था वो भी हमें बताओ कि किस प्रोसेस के तहत आपने ये सारा रिजल्ट निकाल दिया। पर भाई इन सब सवालों का जवाब नहीं दे पाया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेरा जवाब खामोशी नहीं हो सकता है। जब जवाब देने को कहा जाए, on examination the commission finds that your response is entirely silent on your public and widely circulated during the campaign statement of poisoning of river Yamuna by the government of Haryana with the intention to cause genocide in Delhi, equating it with an act of war between nations, and the fact that same was not only timely detected by the engineers of Delhi Jal Board but also stop poisonous water at the border of Delhi. Very good. तो तू चुपचाप बैठा रहे और फिर जब बोले तो कुछ भी अनाप शनाप बोले। उसे प्रूफ नहीं कहते, उसे बकचोदी कहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के केजरीवाल को झूठा बोलने के बाद केजरीवाल किस मोड में है वो आगे बताता हूं, पर अभी ना स्टूडियो में चलने का टाइम हो गया है। गोविंदा ने करिश्मा से कहा, सरकाई लियो खटिया। अब मैं आ गया हूं, शायरी सुनाऊंगा एकदम खटिया। हरियाणा ने जहर मिलाया या केजरीवाल ने बनाया भूत। हरियाणा ने जहर मिलाया या केजरीवाल ने बनाया भूत। दिल्ली का हाल बुरा है, ध्रुव राठी की फट गई कमी। ईसी ने पेला केजरीवाल, ईसी ने पेला केजरीवाल, भगाया मार के जूत। दिल्ली का हाल बुरा है, ध्रुव राठी की फट गई कमीज। दिल्ली जल बोर्ड ने लेटर लिखा, दिखाया केजरी का झूठ। दिल्ली जल बोर्ड ने लेटर लिखा, दिखाया केजरू का झूठ। दिल्ली का हाल बुरा है, ध्रुव राठी की फट गई कमीज। स्वाति लाई कचरा, दिखाया केजरीवाल कितना है धूर्त। स्वाति लाई कचरा, दिखाया केजरीवाल कितना है धूर्त। और दिल्ली का हाल बुरा है, ध्रुव राठी की फट गई कमीज। जेल जाएगा केजरू, अब नहीं मिलेगी छूट। जेल जाएगा केजरू, अब नहीं मिलेगी छूट। दिल्ली का हाल बुरा है, ध्रुव राठी की फट गई। अब केजरीवाल इलेक्शन कमीशन ने पेल दिया तो केजरीवाल गुस्सा हो गया। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास एक तो यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग है, इसका पता नहीं इसको इतना क्या कीड़ा है। इसको थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ मेरे पे केस होगा या मेरे को कुछ हो सकता है, ये उठ के आके प्रेस में आम आदमी पार्टी वाले जितने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस में आके कहेंगे अब हमारे साथ ये होगा, अब हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ ये अरे भाई ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करी है, ये तुमने बोला था, तुम्हारे एक्शन का एक रिएक्शन तुम्हें देखने को मिल रहा है। तुमने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हरियाणा जहर मिला रहा है, तो हरियाणा उस पर एक रिएक्शन दे रहा है, इलेक्शन कमीशन को बोल रहा है और केस कर रहा है। तो अब तुमने जो बोला है गलत, उसका खामियाजा तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो तुम कह रहे हो कि जी नहीं अब मेरे को ये जेल में डाल देंगे, ये थोड़ी जेल में डाल रहे हैं। तुमने ऐसे कर्म किए हैं ना कि तुम जेल में जाना चाह रहे हो। तुमने पहले ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे लोगों में क्योस पैदा हो। तुमने बोला कि मास जेनोसाइड हो सकता है, ना कि अदर कोई चीफ मिनिस्टर ने बोला। तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात थी ये। 20 बोतलें। पीसीआई राजनीति कर रहा है। वाह भाई वाह, तेरा जल बोर्ड तुझे झूठा बोले तो इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी वो डेटा निकालकर तुझे एक्सपोज कर दे तो इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। तेरी बात बिना सबूत के ना मानी जाए
तो इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। हरियाणा का सीएम यमुना का पानी पी के दिखा दे और तू उसकी क्लिप काट के लोगों को बेवकूफ बना दे और लोग तुझे एक्सपोज कर दें, तो भी इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। कहा तो भाई तूने था कि तू यमुना में डुबकी लगा के दिखाएगा, और तू डुबकी ना लगाए तो भी इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। भाई कोई पेच वेच ढीला है तेरा। देखो ये जो अमोनिया का नाटक है ना, ये दिल्ली और हरियाणा के बीच में कई सालों से चल रहा है, लेकिन आज तक केजरीवाल ने एक बार ये नहीं कहा कि हरियाणा ने जहर मिला के भेज दिया, जेनोसाइड कर रहे हैं। अभी क्यों कह रहा है वो देखो। कोई दिक्कत नहीं आता। पब्लिक ना इन्हें भगा भगा के मार रही है। ये कुछ बोलने लगते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई 10 साल में क्यों नहीं किया, बता दो। तो पब्लिक को ही कह देते हैं तुम बीजेपी के दल्ले हो, तुम गाली देते हो। प्लीज सर प्लीज अभी बताते हैं सर, यही बीजेपी का। आप बोलिए। यही गाली देते हैं, ये करते कुछ भी नहीं है, गाली देते हैं। नहीं बताओ, केजरीवाल से ये पूछना कि 10 साल से काम क्यों नहीं किया, ये गाली देना होता है? भाई को लग रहा है भाई ने सीधा कह दिया गाली देते हैं, कोई प्रूफ नहीं कोई कुछ नहीं, बस बोल दिया तो बोल दिया, नहीं मानोगे तो तुम बिके हुए हो। ये हर जगह जाता है और बोलता है ये गाली देते हैं वो गाली देते हैं, हम नहीं देते हैं, हमारे तो परिवार वालों ने ऐसा कुछ सिखाया नहीं है। ये भी देख लेते हैं भाई, चलो। पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और रंजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना, उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो। अब ये कहाँ गाली होती है सर, पर अगर आपने कह दिया कि ये गाली होती है तो आप बिके हुए हो। इसने क्या करना है, ये जाएगा सीधा पार्लियामेंट के सामने और सड़क पे न्यूज़पेपर बिछा के लेट जाएगा। मैं तो धरना दूंगा जी। भाई मैं तंग आ गया हूँ इस आदमी की नौटंकी से, पर ये खुद अपनी नौटंकी से तक नहीं आया है। पुनीत सुपरस्टार ऑफ पॉलिटिक्स है ये आदमी, पर भाई मुझे नहीं पता कि आदमी मानेगा कि नहीं मानेगा, पर मैं मान जाता हूँ। ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग द वोक शो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। पेश है दैनिक भास्कर जी तो बहुत मस्त वीडियो थी ये। एक्चुअली में यार तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें। मतलब अरविंद केजरीवाल जी कौन सी राजनीति कर रहे हो, इस किस तरह की नई राजनीति कर रहे हो। और इन सब के बीच में भैया जी आ चुके हैं यूनियन बजट। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया था कल बजट सेशन स्टार्ट होने पहले, तो उन्होंने ये डीप स्टेट को बड़ा ही मतलब लताड़ा था, डीप स्टेट की फिरकी ले ली थी एक तरह से। जो क्या होता है कि जो कोई भी सत्र स्टार्ट होता है हमारे इंडिया के अंदर, तो उससे पहले 2-3 दिन पहले कुछ ऐसी खबर फौरन से आएगी, कुछ ऐसी रिपोर्ट फौरन से आएगी, जिससे क्या होता है कि एक क्योस पे रहता है। और हमारे यहाँ बैठे कुछ लोग उस रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उस रिपोर्ट को या उनके द्वारा कही गई कोई स्टेटमेंट जो फॉरेन में किसी ने बोली है इंडिया के लिए, उसको लेकर क्या करते हैं, इश्यू बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो सत्र चल रहा है उसमें हंगामा के रस के वो ढंग से ना चले। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उनकी चुटकी लेते हुए फिरकी लेते हुए बोला था कि इस बार 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ है। तो अभी मैंने बजट सेशन पूरा देखा नहीं है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जो आज का हुआ था। तो ये हम देखेंगे कि आज संसद के अंदर कुछ ऐसा हुआ है क्या कि क्योस कुछ किया हो विपक्ष ने या किसी और पार्टी ने, वो जरूर देखेंगे हम। हाँ तो लाइव में क्या चल रहा है, लाइव में देखेंगे थोड़ा सा। For the time being looks quite favorable. Now how the global uncertainty will play out, how will be the response of the Trump administration to some of the
things that the Biden Trump administration has indicated in terms of tariff and other things. So if those things doesn't escalate and the global uncertainty sort of meddle down, माननीय सदस्यगण, सेशन स्टार्ट हो चुका है और आइटम यहाँ पे विपक्ष ने अपना जो रोना पीटना है वो स्टार्ट कर नंबर दिया 1 है। श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra. समय से बहुत अपेक्षाएं थी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। टूंटी बंद कर दो, टूंटी बंद कर दो, टूंटी बंद कर दो, सारा नीचे कर दो, जितना है ऊपर सारा नीचे कर दो। बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। 9 तरीका। Continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development,
C. Invigorate private sector investments. D. Uplift household sentiments. And E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, Developing Agri-Districts Program. Motivated by the success of the Aspirational District Program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit.
This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on tur, urad and masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep
islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued.
Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region.
The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms
provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the eShram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy, public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reform. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized
by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks, and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth.
Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains.
Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose
4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3.
levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines